whenever charges moves, they collide with each other and with the walls of the container, wall of the conductor. Or when each charges collide, each charge has some kind of energy with it. So we okay, note of carbon. Okay. Each charge when traveling has energy associated with it. So when this charge will collide with this electron, I'm sorry, I'm saying a charge and charge and charge, electron, they will lose some of their energy in the form of heat, which will lead to the increase in temperature of the conductor. This increase in temperature of the conductor leads to greater atomic vibrations, which in turn will lead to the hindrance provided to the electron. अब it's all जो है sequentially जो चला. For example, a conductor has so many electrons into them. In normal conditions, we know that कि there is no we know that कि अगर हम लोगों ने चार्जर को अटैच नहीं किया हुआ with the मतलब स्विच या हमने स्विच ऑन नहीं किया हुआ तो हमारे पास चार्जर हीट अप नहीं होता. लेकिन एज लॉन्ग एज हम लोग उसको चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, फोन चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, इट स्टार्ट्स गेटिंग हीटेड अप. एंड सो आवर फोन और व्हाट्सएवर जो भी चार्जिंग के ऊपर चीजें अवेलेबल होती हैं, दैट मीन्स कि समथिंग इज हैपनिंग when the current is passing through the circuit, not before that. So उसका मीनिंग ये है कि when current is passing, all of the electrons now are in a unidirectional motion. And moves with a constant speed known as drift velocity. ठीक है? You do not have to read and understand and memorize everything. These are very interesting points जो कि वैसे ही दिमाग में बैठ जाते हैं. Drift velocity क्या होती है? Under normal conditions जो electrons की speed होती है, they approaches the speed of light. ठीक है? But under the implication of source of current हम किसको कहेंगे? बैटरी को कह सकते हैं. Anything that is giving energy to the charge to move through the circuit. Are you guys following my point? Yeah. I'm a bit confused with the first part. Which first part? We have done so many parts till now. With the losing energy. Okay. No, not with that. We हम Not with लोगों that, ने not with that. The sorry? electricity flowing part. हाँ, मैं उसी के ऊपर. Okay, let me get back to that point. कि अंडर नॉर्मल कंडीशन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम लोग मेटल को टच करें तो हमें करंट फील होता है उसके अंदर. डू वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक? Yes. Do we get an electric shock by touching just by touching the conductor? If no, it's not connected to any switch or anything like that. Oh, then no. So and we also know that के electrons and protons, we are not creating electrons and protons, they're always there. Okay? So if electrons are always there, a conductor have free electrons all the time, why do we not get an electric shock? The reason behind that is that electrons are cancelling each other's electric fields. We do not get, because random directions होंगी, जब when they are crossing each other, the electric fields will cancel out each other's. ठीक है? But जब हम एक source of current attach करते हैं, now जैसे हम लोगों ने magnetism पढ़ा था ना, do you guys recall magnetism? Yeah. मैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था? डोमेन्स पढ़ी थी. डोमेन्स में हमने क्या पढ़ा था कि इफ द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डोमेन्स का स्पिन मोशन अलाइन हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है. सॉरी, एक परमानेंट मैग्नेट बनता है. बट वहां पे भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ईच इलेक्ट्रॉन हैज इट्स स्पिन मोशन एंड ईच स्पिन मोशन लीड्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड. बट अगर नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है तो वो एड अप होके एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी.
बट अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की हैं, बट दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. द सेम थिंग हैपेंस इन द कंडक्टर. Electrons are there, they are moving, they have electric field, but they're cancelling out each other. लेकिन जब हम एक सोर्स And ऑफ करंट, they yes, cancel out each other by the movement या because they're बिकॉज moving in देखे ना opposite. ये, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में हमने पढ़ा हुआ कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दे कैंसल आउट ईच अदर. Okay. So if it's not the same magnitude, then they wouldn't cancel each other No, out. no, no. Okay. But in a particular conductor, they will have the same type of electrons. Okay. Fatma, do you have any questions so far? No, can you give me a minute? I'll be back. Okay. फातिमा, मुझे लगता है अभी अभी उठी हैं. Mhm. Is it okay if you slow down a little? Slow down in terms of Explaining, because it's hard to keep up. I'm recording the whole meeting. Yeah, but just, right now as well. वो मैंने आपको कल बताया ना, I guess I was talking this to Aram के when मेरी पसंद के टॉपिक्स आए होते हैं तो मैं जो एड्रेनलिन लेवल होता है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं बहुत Mhm. तेजी में बोल जाता हूँ. So I'm super Yeah, it's excited to okay. explain all these topics. It's okay. That makes it better because then I'll understand more if you're excited. But just थोड़ा सा मैं like I need more, I'll give breaks and I'll give breaks in between, तो जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम पंगा शंगा होगा मुझे मुझे साथ साथ गाइड कर देना. Okay. अभी ये देख लो इसको दोबारा से. We have a bit of a Mhm. time. कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ. Yeah. एंड ये वाला जो पार्ट डिस्कस किया ना लूज एनर्जी वाला, वी नो दैट कि व्हेन Mhm. टू ऑफ द थिंग्स कोलाइड ईच अदर, उनका एक फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लूज होती है. ठीक है. एंड वेन एवर Mhm. एनर्जी इज लॉस्ट, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, इट्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. Yeah. तो वो जब थर्मल एनर्जी की फॉर्म में वो वेस्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये हीट क्रिएट होगी. हीट की वजह से कंडक्टर के प्रेजेंट जो एटम्स होंगे दे विल उनके एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. अब फॉर एग्जांपल ये एक एटम था, ये स्लाइटली वाइब्रेट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से पैसेज इजी था. ठीक है. बट नाउ इसके एटॉमिक वाइब्रेशन ज्यादा हो चुकी हुई है. अब फॉर ईच इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इट विल बी डिफिकल्ट टू पास थ्रू इट, टू पास बाय द एटम. पास तो इवेंचुअली कर ही जाएगा लेकिन कोलिजन करके जाएगा. व्हेन कोलाइड करेगा इट विल अगेन लूज इट्स एनर्जी एंड द टेम्परेचर विल इंक्रीज मोर, so its atomic vibration will increase further. For the next electron it will be even more. मैं सिर्फ एक एटम का रेफरेंस दे रहा हूँ. You think of it कि millions of atoms and electrons are at the same time and they are doing this. Yeah. This So this is opposition. Hmm? that's how the energy gets lost because Yeah. it's So being used for. this opposition to the flow of electron is termed as resistance. Okay, I'm back. Everything okay? तबीयत ठीक है? Sorry? Everything is fine? तबीयत वगैरह ठीक है? मौसम कैसा वहां पे? बारिश हुई है आज वहां पे? Yeah. तो आज फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है. Yeah, no, I have fever, so that's why I'm staying home today. और फीवर पे फिर आपको अम्मा ने बोला कि घर रुक रही है तो फिर क्लास ले लो. Yeah. That's the leverage you are getting today. Yep. Okay. रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. जी. सो अगर हम इसको सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं एज अ कंपोनेंट, so that component is known as resistor, which you have studied before. So Ohm's law के फॉर्म, Ohm's law हम लोगों ने क्या पढ़ा था, voltage is directly proportional to current
provided resistance remains constant. क्योंकि जब resistance constant रहेगी, that means temperature भी क्या होगा? Constant होगा. So voltage and current would remain constant. Voltage basically क्या था? Let me give an overview of that again. Voltage क्या है? What is voltage? Potential difference. And what is potential difference? It's like when you get more energy, then there's more current, and Potential the difference is basically the energy utilized by the electron to go through one component only. So अगर हम एक सर्किट डायग्राम बनाए, ये मेरे पास बल्ब है, ये मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन का, ये एरो किसको शो करेगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या करंट के फ्लो को? फातिमा. Current flow? Yes, because current is always from positive to negative, and this would be known as conventional current. And red arrow is showing the electron flow. तो जब हम potential difference is the energy, so अगर हमारे पास जो energy utilization to passing through the component ज्यादा and ज्यादा होती रहेगी, which means कि हमारा this is basically the energy loss ना. Potential difference basically accounts for the energy loss of the electron. And इसको measure किससे करते हैं? Ammeter से या voltmeter से? voltmeter. And is it connected in series or parallel? Series. Fatma? Parallel? अब obviously अगर उसने parallel वो series बोले से parallel. Ammeter, that is current measurement is done by ammeter, and that's connected in series, and voltage and EMF both is measured using voltmeter. अगर मैं इस voltmeter को बैटरी के क्रॉस अटैच कर दूंगा, अभी I do not have enough space, बट अगर मैं इसको बैटरी को वोल्टमीटर को इसके क्रॉस अटैच कर दूंगा तो ईएमएफ मेजर करेगा, इसके क्रॉस अटैच करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा. ओके, so Ohm's law is V is equals to IR. From here R is equals to V over I, but R के एक पूरा इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज भी है हमारे पास जिसको हम अब स्टडी करेंगे. जो रेजिस्टेंस है, it is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of the conductor. ठीक है, इट्स वेरी कॉमन. ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अक्रॉस, उसको उतनी ही रेजिस्टेंस क्या होगी? ऑफर होगी, क्योंकि विद ईच हमने कहा कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतने ज्यादा एटम्स भी होंगे वहां पे. जब जितने ज्यादा एटम होंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट भी होगा. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हमारे पास एक ग्रेटर सरफेस एरिया होगा, ठीक है, तो नाउ रेजिस्टेंस विल बी लेस. कंसिडर दिस कि अगर हमारे पास एक वाइडर पाइप है, वहां से वाटर का फ्लो इजी होगा एज कंपेयर. अगर हमें एक कोई पैसेज करना है फ्रॉम अ बिगर होल, इट वुड बी इजी फॉर अस एज कंपेयर टू द वन पासिंग थ्रू अ स्मॉलर डायमीटर होल. तो रेजिस्टेंस का इस डायरेक्ट रिलेशनशिप इज विद लेंथ एंड इनवर्स रिलेशनशिप विद एरिया. ये फॉर्मूला हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कंडक्टर्स मोस्टली सर्कुलर एंड सिलिंड्रिकल होते हैं, तो वी नो दैट कि सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है. तो नाउ वी हैव टू फॉर्मूलाज, आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई एंड आर इज इक्वल्स टू एल ओवर ए. क्लियर? Yeah, Should I continue or you guys need break? you can continue. Okay. Here one thing to be kept. फातिमा आज बहुत चुप चुप है. Just because of the तबीयत मैं बार बार आपको डिस्टर्ब ना करूं, या आप कोई और if should I keep on going? जहाँ इशू आएगा आप खुद बोल दोगे. I'll tell you. Okay. This relation could also be used in a way कि if area is kept constant, ठीक है, area या cross sectional area of the conductor is kept constant, तो resistance proportional होती है length के. For example, अगर उसने कहा हुआ है
कि at 1 meter length resistance is 2 ohms, resistance का जो यूनिट होता है वो ohms होता है बच्चों, ठीक है, OHM, ohm. फॉर 1 मीटर वो कहता है कि जो 2 ohms है हमारे पास, फाइंड आउट के 0.75 पे उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है. तो we'll use this relationship because this tells us that resistance is proportional to length. तो हम वही रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R1 is equals to L1 over R2 is equals to L2, और हम इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे. ओके. Okay. Another point I forgot to tell you in the previous lecture that EMFs भी सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट हो सकती हैं. अगर हम उसको एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज सीरीज, ठीक है. और इसमें all values will be added. For example, if one battery is of 1.5 volt, then हमारे पास कितनी बैटरीज अटैच है, 1 2 3 and 4, तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 वोल्ट की. अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इफ एनी वन बैटरी stops working, whole of the circuit will stop working. Cause यहाँ से सडन ब्रेक आ जाएगा और जब पाथ ही कंप्लीट नहीं होगा, will not be able to work. ठीक है. Also, we have to make sure कि पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन चल रहा है. अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव का कनेक्शन बिल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, एंड विल बी लेफ्ट विद ओनली वन बैटरी. दैट इज इन टोटल ऑफ 1.5. इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. So we have to make sure positive negative sequence is Wait, followed. can you repeat this part? I am actually repeating it. कि when batteries are connected, we have to make sure, जैसे आपके cells होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा पॉजिटिव भी लिखा होता है, नेगेटिव भी लिखा होता है, ठीक है. सेल्स जो आप बैटरीज अपने Yes. उसमें ऐड करते हो, क्या कहते हैं, रिमोट्स वगैरह के अंदर, उसपे यू सी दैट ना पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है. तो बैटरीज को जब हमें Okay. सीरीज में अटैच करना होता है, वी हैव टू मेक श्योर के पॉजिटिव नेगेटिव का सीक्वेंस कंटिन्यू हो रहा है. अगर एट एनी पॉइंट हमने नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अटैच कर दिया है, तो ये बैटरीज एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगे, और हमारी टोटल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. ब्लास्ट भी हो सकता है. ब्लास्ट तो नहीं Like कहेंगे, sparks बैटरी, fly. हाँ स्पार्क्स होंगे, तो हमारी बेसिकली एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. तो सीरीज, इन ऑर्डर टू ऐड और हमारे पास ग्रेटर ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, वी हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ओके. दिस इज द Okay. सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसमें हमारे पास टोटल एनर्जी वुड रिमेन सेम, दैट इज 1.5 वोल्ट, बट द एडवांटेज इसका ये होगा हमारे पास कि इफ वन बैटरी स्टॉप्स वर्किंग, रेस्ट ऑफ द बैटरीज विल कीप ऑन वर्किंग, और ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. Mm. अब बताओ यहाँ तक कोई मसला. Is there like a negative to it? सॉरी. Is there a negative to parallel circuits? Like, in series, but if you put like charges together, it will explode. What about for parallel that circuit? that 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 happens in every circuit, Oh, okay. because पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. So, but how? Oh, okay. आगे चलें. Wait, but in parallel circuits, doesn't it like add up the currents in each battery? No, Then I know because something adds up. no, nothing adds up. इसके अंदर the whole of the energy would remain constant, ठीक है, बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो इंडिविजुअली जा रहे हैं. यहाँ पे ईच इलेक्ट्रॉन ऐसे सबसे पास आउट होके जाएगा, ठीक है. Oh, okay. और इसके अंदर इफ सर्किट ब्रेक्स एट एनी पॉइंट, तो हमारे पास द रेस्ट ऑफ द सर्किट विल कंटिन्यू वर्किंग. सॉरी, इफ द बैटरी ब्रेक्स एट एनी पॉइंट, या जो है डैमेज हो जाती है, रेस्ट ऑफ द सर्किट विल कीप ऑन वर्किंग.
Okay. आगे चले। जी। फातिमा, क्लियर है बच्चा? Yeah. Okay. Now, same applies for resistance in series. अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, उसकी टोटल रेजिस्टेंस आपस में ऐड अप होती है। ठीक है, इसके अंदर द थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज कि करंट वुड रिमेन सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर एंड वोल्टेजेस जो है उसमें क्या होंगी, ऐड अप होंगी। इसकी सर्किट जो कंपोनेंट डायग्राम होती है वो ऐसे होती है, बॉक्स। Now, why the current is same? Because same number of electrons are passing through each resistor. That is why current would remain same. But voltage चूंकि is potential drop basically क्या होता है, energy utilized to go through that component. तो जितनी ज्यादा हमारे मतलब passing through each, उसकी energy जो है वो divide होती रहेगी. That's why voltage across each resistor is different. On the contrary, when we talk about, this is for series. Now we'll discuss about parallel. पैरेलल में आएगा 1/r की फॉर्म में। ठीक है, सपोजिटली अगर हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया है तो ये क्या आएगा, r1 + r2 + r3 ओवर r1 r2 एंड r3। अब अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है कि उसको कैलकुलेटर में यहाँ तक तो वो सॉल्व कर लेता है, बट हमें RT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ RT हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आंसर हमारे पास इसका आया 1/3, तो बेसिकली RT की वैल्यू क्या होगी, जस्ट 3 ohms। ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट कर देता है व्हाइल सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस। Oh, okay. फातिमा, See, you do add something in parallel. Yeah. वो तो रेजिस्टेंस है ना। Yeah, but it's still in parallel circuit. या What's the I1 equals I2 equals I3? That's like the current equals to each other. सॉरी, The or the thing in the series circuit. व्हिच थिंग इन सीरीज सर्किट, ये G or RT। equals R1 plus R2. RT means total resistance। Okay. ये मैंने आपके लिए बिछाया हुआ था कि आपने पढ़ ली हुई है तो बस उठा दे। नाउ आई नीड 2 minute break cause मेरा मुंह थक गया बोल बोल के। Tells us that electricity could produce magnetism, which is the working principle for motors, and magnetism could produce electricity. Could you mute your side button? Working principle of generators. Motors are devices which converts electrical energy into mechanical energy. And generators are devices which converts mechanical energy into
electrical energy. Both works on the principle of electromagnetic induction. Then comes the construction of motors. When it comes to motors, the construction base is based on permanent magnets, north and south pole, in which a coil is placed attached to copper rings, attached to two carbon brushes, attached to battery. अब ये जो है मेरे पास, दिस इज मेरे पास कॉपर रिंग्स, जिनको हम स्लिप रिंग्स भी कहते हैं, जिनकी वर्किंग ये होती है कि इट टेक्स करंट in and out of coil. This is coil, जिसको हम आर्मेचर भी कहते हैं. These are permanent magnets. And in case of motors, हम permanent magnets की place पे electromagnets भी use कर सकते हैं. Because we are already using current at the input, so we can also use. ठीक हो गया? Then हमारे पास these are carbon brushes. इनका काम होता है करंट को इन एंड आउट ऑफ सर्किट लेके जाना. एंड ये मेरे पास क्या होती है, बैटरी. ओके. अब मोटर्स एंड जनरेटर्स की कंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि अगर हम यहां से बैटरी को रिमूव करके यहां पे हम कोई लैंप वगैरह अटैच कर दें और यहाँ पे हम एक्सल अटैच कर दें, जिसको हम मैकेनिकली क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, सॉरी रोटेट कर रहे हैं. बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, वर्किंग भी सब चीजों की एज इट इज रहेगी. डू यू गेट इट? क्या हमने क्या किया है, हम लोगों ने जी. बैटरी को रिमूव किया और उसकी जगह पे कोई लैंप या कोई भी सोर्स ऐसा अटैच कर दिया जो करंट को यूज कर रहा है. ठीक है. और हमने कॉइल के साथ एक एक्सल अटैच कर दिया जिसको हम मैकेनिकली क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. इस तरह हम मोटर को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरेटर्स के अंदर. क्लियर? अब वर्किंग होती Yes. कैसे है, अब ध्यान से ये चीज सुननी है. वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, उसको रिव्यू कर सकते हो. अब नाउ वी हैव टू सी हाउ मोटर्स एंड जनरेटर्स वर्क. दोनों में पैरेलल इस वजह से करवा रहा हूँ बिकॉज सिर्फ स्लाइड सी चेंजेस लेके आनी है एंड हम लोग जो है वो न्यू टॉपिक पे पहुंच जाएंगे. सो अब वर्किंग होती किस तरीके से है, हमारे पास ये मोटर्स हैं. अब जब इसमें यहां से करंट फ्लो करेगा, when from positive to negative करंट ने फ्लो करना है. लेट मी यूज द ग्रीन कलर. पॉजिटिव से यहाँ पे गया, इन रिंग्स के थ्रू इधर आया. हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपवर्ड, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, डाउनवर्ड. इसको तो मैं एरो सी बना लेता हूँ. अब मोटर्स के केस में हमारे पास जो है
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है, एंड जनरेटर्स के केस में वी अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इन बोथ द केसेस जो थंब है वो इंडिकेट करता है फोर्स को या डायरेक्शन ऑफ मोशन को ऑफ कॉइल. ठीक है. जो इंडेक्स फिंगर है वो शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड मिडल फिंगर जो है दैट इज फॉर करंट. अब अपना अकॉर्डिंग टू योर लेफ्ट हैंड रूल, अब आपको डायग्राम सामने नजर आ रही है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी? मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब अपना इंडेक्स फिंगर रखो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अपना जो मिडिल फिंगर है उसको रखो इन डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी उसको अपवर्ड रखो. आपका थंब देखो राइट डाउनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा होगा. Yeah. ठीक है. विच मीन्स दिस साइड विल गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी मेरे पास, और दूसरी साइड कहां जाएगी? अप आएगी. तो ये डाउन जाएगा और ये अप आएगा. अब हो किस तरह रहा है? व्हाई इज दिस ऑल हैपनिंग? होता यूं है कि जब हम लोग करंट यहां पे इंटर होगा, एज वी डिस्कस कि व्हेन करंट विल इंटर, तो ये इस कॉइल में क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से. ठीक है. वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी, और रिजल्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन will give us the mechanical movement. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम जनरेटर्स की बात करते हैं, तो जब हम कॉइल को रोटेट कर रहे होते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना, when we are discussing that na electric current is producing magnetic field and magnetic field is producing current, we have to make sure that these values are continuously changing. As long as these values are changing, we'll get the results. अगर values change नहीं होंगी, there would be nothing at all. That is because current की value change नहीं हो रही, magnetic field create नहीं होगा. मतलब there would be a fixed magnetic field, but वो further on कुछ create नहीं कर पाएगा. So in order to get all these results, this should keep on changing. So जब अब आप इसको मैकेनिकली रोटेट कराओगे जनरेटर्स के केस में, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थ्रू द कॉइल क्या हो रही होगी? चेंज. जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थ्रू द कॉइल चेंज होगी, तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो कि बेसिकली जनरेटर्स का इफेक्ट है. सो हम लिख सकते हैं कि इन मोटर्स, ये लास्ट पॉइंट है बस, इसके बाद विल एंड द टॉपिक. इन मोटर्स, when current passes through the coil, it creates magnetic field which interacts with the magnetic field of interact with the magnetic field of permanent magnet, and in result we get mechanical movement.
अब यहाँ पे हमने पॉइंट क्या किया है कि whereas in generators for EMF to occur, magnetic field must change continuously through coil. So when we rotate the coil in the magnetic field of permanent magnet, work is done on the charges present in the coil, which leads to the occurrence of EMF. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, कॉइल के अंदर प्रेजेंट चार्जेस के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स. जब चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है, they will have energy to go through the circuit. This is what we called in the previous chapters EMF, energy given to the charge to go through the circuit. तो जब मैग्नेटिक फील्ड में आप उस कॉइल को रोटेट करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस कॉइल के अंदर प्रेजेंट चार्जेस के ऊपर क्या करेगी, वर्क डन करेगी, और इन रिटर्न हमारे पास क्या आएगा, EMF जनरेट होगा. Okay, we'll resume from Yeah, here okay. tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.